And more coming in as the Jharkhand political thriller continues. JMM MLAs who took off to Hyderabad as Champai Soren was sworn in as the new Chief Minister of Jharkhand are all set to head back to Ranchi. This is to happen around 5 p.m. today. And remember, this development comes a day ahead of the mega floor test in Jharkhand Assembly. Tomorrow is when Champai Soren has to prove his majority on the floor of the House. And then he continues to remain Chief Minister in Jharkhand. This, of course, as the JMM Congress alliance had feared horse trading, and they had levelled these allegations and expressed such fears against the BJP, is why they had moved 39 of their MLAs to Hyderabad. Now, news is that all of those 39 MLAs who are to head back to Hyderabad today and tomorrow is when he will have to prove majority on the floor of the House. They claim to have the magic number, 43 MLAs who they say are supporting him. And this as the majority mark is 41, which is the halfway mark. Now, lots has been happening in Jharkhand where Hemant Soren's arrest led to how he also went on to resign. And Champai Soren was sworn in as the Chief Minister of Jharkhand. Tomorrow is when Champai Soren will have to put out the numbers. He had recorded a video where he did a head count on camera of the number of MLAs supporting him. And this he had presented as proof to the governor. But tomorrow is when he will physically have to parade those MLAs. Let me straight away cut across to Aneri, who's joining us from Hyderabad. I believe she's with us on the phone line at this point. Aneri, tell us what is to happen at 5 p.m. We believe that those MLAs are to return back, and tomorrow is when Champai Soren will prove that he has the majority by his side. Well, that's right, Suesha, just ahead of the floor test, which is all set to take place tomorrow. Well, we are expecting that all these MLAs who are staying at this particular Leonia resort where we are, as you can see, police vehicles also entering at this particular resort where these MLAs, the Jharkhand MLAs who had arrived here on Friday, they have been staying here since last 2 days. And what we are learning is that at around 4:30 is the time when they will be leaving from this resort, because it is expected that around 5 p.m. they will leave from Hyderabad and reach Ranchi by 7 p.m. is what we are learning. So just ahead of the floor test, because to keep their numbers intact and also to make sure that JMM forms the government in alliance with other parties and including the Congress, we see that all these MLAs were sent here to Hyderabad. They were flown down to Hyderabad from Ranchi, and tomorrow, just ahead of the floor test, they are now once again heading back to Ranchi, and tomorrow they will be showing their numbers on the floor of the House. So we'll have to wait and watch how it turns out to be. Just after Champai Soren had taken oath as the Chief Minister, all these MLAs from JMM and also Congress, they had arrived here in Hyderabad and they have been staying at this particular resort, the Leonia resort here. Near about 70 rooms were booked at this particular resort to make sure that all the MLAs are safe, and also there's no poaching or there's no horse trading of these MLAs, and that is the reason why all these MLAs from Ranchi were brought down to Hyderabad. Here, but JMM is holding a live news briefing right now. Let's quickly cut across to it to listen into what the status at this point is. 2023లో కూడా మళ్ళీ ఆనాటి తెలంగాణ आदिवासी और मूलवासियों का ज़मीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पैसा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पैसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट बना।
और इस एक्ट के अधीनत नियम के मुताबिक यहाँ का ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र एक मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थे। बाद में जिला से हम लोगों ने जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके ज़िले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से कि आप इसको सख्ती से लागू करें और जल्द लागू करें। और इसके बाद ग्राम सभा, कहीं भी ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो ज़मीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, ज़मीन के नीचे कोयला है, अबरख है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ और एक डिमांड है मेरा, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी का जो ज़मीन, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय में, तो वैसे लोगों को चिन्हित करें और इसका इस स्पेशल कोर्ट बनावे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। गरीब बेचारे हैं, लोअर कोर्ट में जीत जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे थक जाते हैं, वो लड़ाई जो करती है उसका ठंडा पड़ जाता है। और ये जल जंगल ज़मीन कैसे बचेगा? आज जंगल लुट रहा है, नदी नाला लुटा रहा है, बर्बाद हो गया सब जगह। All right, so that is the word coming in as this is the JMM news briefing where they go on to claim political vendetta as far as the land scam is concerned. Remember, it is Hemant Soren who is still in ED custody, and the JMM goes on to add how many tribals are displaced and they need special courts to help the poor. Now, as Hemant Soren does find out to the legal route he wants to take in terms of what next for him, this is Champai Soren who has to prove the numbers tomorrow on the floor of the House to continue to stay Chief Minister in Jharkhand.